for some videos. Then after then, when he Oh, going when to he feels certify, and then convinced, yeah, well, if he feels convinced that he should join this I, course, I'm yeah. not convincing him, sir. I just suggest him you You need to learned your watch his lesson. video. You learned your lesson. And he said you are using only English language and you are not using Hindi language. So how can I learn? Ah, And yeah, that I you will learn. You that will I learn. then I say you need to spend time and then you Yes, will you'll realize. figure it out. You'll figure it out. Okay. Yeah. Hmm. What will going to happen? And he said clearly mentioned he's not teaching grammar and another thing, but I'm teaching I everything. I'm teaching grammar as well, yeah, but in a I different said way. Hmm. I said him You you won't are realize it. not Hmm. you are not teaching direct way, Hmm. but Yes. but you are teaching all those things. Yeah, exactly. I will make sure that the grammar I teach you doesn't confuse you. A lot of the students come after doing grammar course into my class and they look at a correct sentence and say, it is incorrect. How? I studied grammar rule. It is not following the grammar rule. They look at an incorrect sentence. Yeah, it is correct according to the grammar rule. So study grammar in a way that doesn't actually confuse you. Study grammar in a way that helps you improve your understanding of English and learn faster and better. Hmm. Personality also plays a role a little bit. Like some people are sharper, they can Eh, appreciate things that, like, you know, I made a statement in the previous class कि मैं कोई भी इंग्लिश टीचर के एग्जाम जो होते हैं, जो टीचर बनने वाला एग्जाम होगा सरकारी, मैं उसको क्वालिफाई नहीं कर सकता, लेकिन जो लोग क्वालिफाई कर जाते हैं उनको इंग्लिश जरूर सिखा सकता हूँ. तो most people didn't understand what I meant. Couple of people understood what I was trying to say. You guys understand when I make this comment that there are exams in India to become teachers of English. Like high school teachers, middle school teachers, uh, uh, you know, college teachers. I can't qualify those exams. It's very difficult for me. Almost no chance. But those people who qualify those exams and eventually become teachers, I can teach them English. What does that mean? What do I mean to say? Tell me if you understood that comment, if it has any meaning at all. Kusum is not here. Kusum also confused. He said, what are you saying? If you can teach them, why can't you qualify those exams? Why will you fail those exams? I said, that's the Good evening. point. I'm trying to highlight why you guys have problems. India defeated Australia in your voice Australia. is echoing, sir. Thanks to Musharraf. Okay. Sabaji, Arish Babu, you guys are all quiet. You entered but said nothing. I thought the first thing we do is exchange salutations. Hello. Hello. Doing great, thank you. Good evening, Sabaji, Arish. Good evening, Sir, sir. in a future, In are the you future, going to in the future are you going to private all those video? I have to. Oh. Maybe I'll do it tonight, now that you reminded me, except for a few. Okay, I need to change the speaker here. Please can just stop or start video with AC. So I'm going to actually not allow, I'm going to actually ask my students, physical class students, to take care of my guest because I'll be busy with a lot of work and all. Somebody is probably coming tomorrow, okay, from Scotland. So she will land in Mumbai at about 11. Sir, your And voice is not good. and then she will get here. Sir, please fix the mic, sir. Hold on. All right, let's use the mic. Yeah.
I was saying something personal to Lucky. Yeah. Hmm. Let's see. I've been very busy today. So we have sentences here. I've been in problems since I chose engineering. Ravi, since I chose, that's all. Okay. I have had feelings about you since you chose your life on your own. Okay, fine. So there is nothing wrong. No, sir. Singh Saab is using chose ed. So that's a different. Okay, this listen, guys. There is conceptual errors and there is just lack of information. Understand the difference? So what is the? Everybody knows that a verb has a past form. That's the concept. Now, instead of chose, you wrote choosed. It's not a big problem. Exam में number कट जाना है, इसमें दो मत नहीं है. But when you're learning, so it's not a big error. You just didn't know that the past tense of choose is not choosed. It is chose. It is not a regular verb. It is an irregular verb. बता दिया, बात खत्म हो गई. तो कॉन्सेप्ट डेवलप करने में समय लगता है. इंफॉर्मेशन थोड़ी ना मुश्किल है गेन करना. I learn something new every day. लेकिन वो learn something में concept से ज्यादा क्या होता है वो? Just new information कि अच्छा ये एक word है, अच्छा ये एक word का एक ऐसा use है. All right. तो आप लोगों को भी सीखने को डिवाइड करना होगा अलग अलग कैटेगरीज में कि क्या कोई कंसेप्चुअल लर्निंग हो रही है. बात समझ में आ रही है? तो but that's not a big error. किसी ने chose के जगह choose लिख दिया, किसी ने went के जगह go लिख दिया. That's not a problem. Aditi, my daughter, couldn't use the past tense of a lot of verbs when she was a young girl because उसके दिमाग में past tense का regular form, regular verb का एक pattern होता था, तो सब में ed लगाती थी. She was living in Bihar ना, so there were verbs that she wanted to use in the past tense, लेकिन वो उसको नहीं पता था कि उसका regular irregular है, उसने उतना नहीं सुन रखा था. When she was 2.5, 3 years old, I'm talking about that time. So she used to put that ed. Okay. Yeah, cooked उसने ऑडियो में कहा है cooked, my mummy cooked. Okay, cooked नहीं बोली वो, cooked बोली. तो होता है ना कि आपका ये कॉन्सेप्ट है कि पास्ट टेंस चाहिए, लेकिन इंफॉर्मेशन नहीं है कि पास्ट टेंस क्या होगा इसका. क्या आपको समझ आ रही है मेरी बात, बोली हुई बात? ओके, let's go through the sentences you guys have written. I have already sent. I've already seen these sentences. Yep. So, is it correct? Has he had a friend since? No, no, no. That, You have started working at TCS for 2 years. Okay. नहीं, you have worked. Start to एक एक्शन हो गया बात खत्म. लेकिन वर्क जो है हुआ और अभी तक चल रहा है. तो you have worked in TCS for 2 years. Why so many? Yes. I'm glad that you noticed this. क्योंकि Yes, confusion. texted that. She corrected. Yes. Yeah. Yeah, that's right. That's right. अच्छा, एक बात बताइए वो चीज के लिए. All those people, विकास, मनीषा, आरेश, कितने कितने लोगों का नाम वहां है? इन लोग की तो आज बैंड बजा के रखेंगे. क्या हुआ था जी? आपने मैसेज देखा फिर आपने जवाब क्यों नहीं दिया? Why didn't you reply to these messages? Very good. Where is I it? did not see the messages, sir. तो फिर Today morning I checked the message and got to know about these things. Problem. Yeah, that's not fair, sir. If person need help, Saurabh, he why should did you reply. remove that list? Saurabh, why did you remove that list? Put that list Yes, back in the group. Put that list back in the group and learn everybody.
the behavior in a group. You are supposed to help each other out. Somebody's asking a question. Okay. Can you all pin a comment or not if you want to? Do you have the right to pin a comment or not? So, okay, Saurabh asked a question. Maybe somebody saw and didn't know what to say. At least that person could have replied, "Hey, I'm really sorry, I can't help you this much." Let's see if somebody else can reply. Why would you simply ignore saying nothing? Tell me. Put that screenshot, Saurabh, in the group again. I was really annoyed by that. I told you, early morning it was, and this is what I saw. So those people who are in Bihar Sharif or near Bihar Sharif, when she arrives, because I'm still not 100% certain. Okay, I'm still not 100% certain. Okay, but if because Mumbai to Bihar Sharif is quite far, maybe she will change her mind any moment. Okay, if she changes her mind, that's another thing. But if she takes the flight to Patna, okay, direct flight to Patna is 23,000 rupees from Mumbai. It will take about 3 hours to get to Patna. But other flights will cost around 10,000-11,000 rupees. It will take her 5-6 hours from 2 o'clock to 7 or 8. She will reach Patna 7 or 8 o'clock. Then it is gonna be hard, to bring a lady, young girl, beautiful lady from another country at 8 o'clock to Bihar. I don't think it is a good idea. So maybe she'll stay in Patna in a hotel room or something, and then in the next morning, she can come to Bihar. So I would say that if you guys are, I don't know, if I don't go, then I will ask somebody else to go and pick her up, somebody who is in Patna. Well, guys, if you are near Bihar Sharif, if you're in Bihar Sharif, then I'll let you know. You guys can come and talk to her and have some, face-to-face practice with her as well, native speaker of English. Sir, where are they coming from? She's coming from Scotland. She is Scottish. She lives in Oh, the UK. So, what are we going to study? Today we have a very low attendance. A lot of people are absent. Where are they all? Sir, because of the weather, I think. I don't think so. Sir, I think in Bihar Sharif there is not too cold. That's why you are not wearing sweater. The correction in the sentence. In Bihar Sharif, it's not too cold. पहले क्या बोला था? पहले क्या बोला था? You वो भी बता। you are not wearing a sweater. कि पहले वो यार सिर्फ जो वो सेंटेंस कैसे सही गलत हुआ वो पूछा आपने क्या बोला था? आप अपने ही वर्ड को अगर नहीं सुनोगे तो आपके सीखने के चांसेस घट जाते हैं। एक लर्नर को चाहिए अपने वर्ड पर ध्यान देना। एक समय Yes, आएगा sir. आपकी कॉन्फिडेंस लेवल सही हो जाएगी और आप बिना सोचे बोल सकते हैं। अभी मत करो ऐसा। आपने देयर इज नॉट वेरी कोल्ड बोला था, क्या बोला था? Sir, देयर इज नॉट वेरी कोल्ड, बाद में आपने कहा इट इज नॉट वेरी कोल्ड, विच इज करेक्ट। इट इज नॉट वेरी कोल्ड इज करेक्ट। मौसम के लिए देयर से नहीं इट से बोलते हैं। लेट्स प्रैक्टिस। Let's talk. Question number 1. Everybody, what is the question? Complete the question. You will decide कौन सा टेंस चाहिए, सोच के बोलना, okay? मैं करेक्शन करूंगा। Where Steve Irwin grew up? क्या पूछना चाहिए? where Steve Irwin was grown up. नहीं. Sorry, I'm skipping some questions, some exercises. Let's complete the text. Everybody, complete the text. Complete Diana's text. Diana's text. Diana did a lot of work.
Guys, complete all the 6 texts. Both. Good evening, sir. Hello, Sam. You're very late. Why? Because I was sleeping, sir. Ah, okay. Intrusive is an adjective which comes from the verb intrude. And the noun is intrusion. So when somebody intrudes, अब जब जैसे मैंने बोला when somebody intrudes, क्या आप समझ गए मैंने क्या बोला दोस्तों? खाली ग्रामर के हिसाब से, मीनिंग के हिसाब से नहीं. When somebody intrudes, तो intrude क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच बताओ intrude का. मैंने बोला when somebody intrudes. Verb. हाँ, बस यही फीलिंग आना चाहिए. Somebody goes, somebody laughs, somebody eats, somebody sleeps, somebody intrudes. They interfere, they go deeper than they should. Okay. So a person who does that is called an intruder. An intruder. Just like someone who teaches is a teacher. So someone who intrudes is an intruder. Now, intrusive is the adjective. First of all, you'll have to understand the idea of intrude. So the Chinese soldiers intruded into the Indian territories. The Chinese soldiers intruded into the Indian territories. Okay, so where you should not enter, you enter that place. That is intrude. Okay, noun. The place is prohibited. They should not for Chinese. It's an Indian territory. They should not enter. So intrude. They intruded. Okay. So intrude is that verb. Okay. Now intrusive. Some people's attitude is intrusive. They are intrusive. They always try to enter where they should not enter. Figuratively, they take interest in the matters that they should not take interest, in. And now think about some, surgeries. In some surgeries, they just need to open the skin a little bit and do what they need to do, okay? And then go deeper. So that is more intrusive or not? They're going deeper. So earlier, the cesarean operation was more intrusive. Today it is less intrusive. Okay, so us tarah se intrusive can be used to describe some, surgeries. Exactly. Yeah, it will definitely. It's less intrusive. Okay. I marketing book, something you Okay, have. just a second. When such words are used in different contexts, Yes, sir, the yes. meaning changes slightly, Yes. but the Context will essence of the word will remain. So when you talk about biology, surgery, intrusive. Now you can talk about sales, intrusive, salesman. Okay. So similar, yeah. less intrusive, bothering. Exactly. For example, when you go to a supermarket, why do people like buying things from supermarkets? Because customers can just move around and they don't have these intrusive salesmen. They don't have these intrusive salesmen. So shopping at a supermarket is less intrusive. Shopping at a supermarket is less intrusive. People don't ask you questions. All right. You can feel free to choose, see what you want to see. Finally, if you like something, you take it to the cash counter, buy it. But if you go to another shop with a salesman, they keep talking to you all the time. Some people are not happy with that. They want their privacy, their time, their space. Okay.
मेरी बातें सबको समझ में आ रही थी या सब अपने अपने एक्सरसाइज में लगे थे कि बोलने तो उस बुड्ढे को? ठीक है। सर आप यू स्पोक बुढ़े बट आई लिसन गुड्डू को. आई गजब मनीषा, that's called attitude, huh? Manisha can't even think of me as an old man. Wow. I said buddhe, she heard guddu. We are not thinking you are an old person, sir, because you all those time you are challenging something again and again something. What am I challenging? Sir, Challenge, you are getting challenge. younger in English language. That's why we love you. Come again? Sir, Both of you said you something I are couldn't understand. You are you taking are challenge, sir, again and again. That's why we do not thinking you are old. What challenge are you talking about? I'm coming to you, Manisha. First, let me deal with sir. this guy. You are getting means younger in English language. We love you because of your English, not for your appearance. That's the point. Thank you, Manisha. I wish I could record. I'm recording it. Okay. I'll take this bit out and play it as a short. I love that. What? She said that my students like me for my English, not for my age, not for my looks. Lovely, Manisha. Your English and your behavior. My behavior is controversial. Some people like That's it, fine. some don't like it. Some don't like it. Which challenge are you talking about? I don't know. You tell me. You brought up the word challenge. अभी आपने खुद ही बोला था कि मेरे मोहल्ले वाले जलने वाले हैं. I knew you were insinuating that particular thing. I knew. Well, yeah, we are having a guest, and I know I can only host a guest who speaks English like that. Otherwise, I mean, everybody, a lot of people can, but yeah, I do not make much of a deal of it. Like it's not a big deal to me. So I give it. मैं इस बात से नहीं थिंक कर रहा हूँ सर. मैं उस बात से थिंक कर रहा हूँ जो सामने वाले थिंक करके जो आप हैप्पी होने वाले हो. Yeah, वो लोग तो बहुत जलते हैं. There, last time my friend was here, they said ये अपनी वाइफ को तलाक दे रहा है. ये अमेरिकन आई है, इसी के साथ जाएगा ये. You know. Tani, had you heard this comment or not from someone? No, There, sir. I there never heard. is a nani in our mahalla. She has interest in everybody's personal matters. Okay, and your neighbor told Who is me. she, sir? I can't mention the name in private, not in public. They might watch this video. But you said Nani. There is, I mean, such people should be called nani na. Uh, She's that's not the easy for literally, Tani. She is going to find the name. she's not literally a nani, but yeah, gossip. So finally, you are here. I am here, sir, Now from you're not. long time. When I repeated that You question. was speaking, so I just comments it. I totally appreciate that. I love those students who walk into the class and do not really, say that intrusive hello, sir. Intrusive Hello. hello, sir. When there is a conversation going on. Yeah, lovely. That shows maturity. You was talking about challenges or
Yeah, that's why I said you joined it quite late actually. Kusum, you was talking? No, you were talking. You were, okay? Oh, sorry. You were talking about challenges, देखो, sir. आपके बोलने से गलती से मुझे प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपके दिमाग में है क्लियर, ठीक है? क्लियर कब होता? आपने बोल दिया उसके बाद कहते हैं नो नो यू वर, ओके? लेकिन आप अगर रिलैक्स थे और जब मैंने कहा यू वर तब आपको याद आया ओ यू वाज ना, Yes, sir. I यस। didn't get, sir. तो इसका क्या होना है पता है ना? आपको प्रैक्टिस चाहिए ताकि आपका दिमाग तुरंत नोटिस करे। Actually, sir, I noticed that I do many mistake front of you, or I do always. I don't know, but I नहीं, noticed this. ये जो This लोग ये thing. लाइन कहते हैं मैं उनको कहता हूँ जहां तुम कहीं बात करते हो उसको रिकॉर्ड कर लेना कभी, फिर लेके आओगे फिर वो गलतियां दिखेंगी। बस प्रॉब्लम यह है कि कोई किसी और के साथ बात करते समय वो पता नहीं चलता तुम्हें। आई एम द वन हु हाईलाइट्स देम। And sir, another thing, I can't speak too much front of you always. That I can Also, understand. I'm your teacher. I put you a little bit under pressure unintentionally. I Just always come on pressure when I speak to you. that makes sense. That makes sense because you know I'm your teacher and I can notice the mistakes you're making. So that puts you under pressure. And another thing is, you have this attitude in your head somewhere that I have to prove it that I have learned English, and that also puts you under pressure a little bit. Okay, so try and learn to be relaxed. Don't make much of a big deal of this learning English. Just think, okay, people learn, I'm learning. This is how you can manage to, get rid of that pressure that builds even if you do not want. Okay, sir. May I say something about your challenges, sir? What kind of challenges are you facing? Maybe. Go ahead, let's see. Your challenges is you take challenges that you will teach us or you will um हिंदी में बोल सकते हैं। you will not give up till then we will start speaking English. Till we start, we will nahi, till we start, till we Till start. we That was start a very lovely speaking English. sentence, Kusum. You made a lovely sentence. I will not give up till you guys start speaking. Good. Yes. Okay. That's correct. I like that challenge. I'm okay with that. This challenge is really important to me, but I cannot, meet this challenge, successfully without your cooperation. Okay. Sir. Are you all done? Completed? All the 6? Ankit, you are looking like a, one of those iconic filmmakers, because of your hairstyle and the beard and all. You see, filmmakers have this kind of look. The actors have the pressure to look like, very fancy and all, but filmmakers, they are more talented. Shekhar Kapoor, tell me some more names, even, Bhatt, Karan Mahesh. Johar. Karan Johar is slightly different. I mean, he makes films of his own kind, He has his own genre. He has his own genre. Okay. Let's check. Steve Irwin. Steve grew up on his parents' wildlife park in Australia. Where did he grow up? On his parents. Look at the spelling of parents, everybody. His parents' wildlife park in Australia. And became a popular TV personality, with his TV series, The Crocodile Hunter. He died in 2006 while filming a program about stingrays. That's so sad. He died in 2006 while filming a program about stingrays. Did he die of the, a bite, or I don't know, sting of a stingrays? Because it's called stingrays, so maybe I think it stings. That's why it is called stingrays. So
Did the stingrays become the reason of his death? I don't know. We'll have to Google, find out. That would be shocking. Next, Bindi Irwin. Bindi, a TV personality since she has been. You're getting it wrong because you see, Bindi was born in 1998 and she still is alive. She has been a TV personality since she was 2. Since her father died, since means from the moment, since means from the moment, since her father died, she has made many wildlife TV programs on her own. She started in the field. अच्छा पहले ये लिखा स्टार्ट है भी, इसको स्टार्टेड बनाया आपने Start. तो ये इस तरह की गलतियां मैं ना बहुत बुरा मानता हूं। क्या? क्योंकि इस तरह की गलतियों में क्या होता है, अगर मैं स्टार्टेड बोल भी देता हूं तो इसका मतलब नहीं निकलता। शी स्टार्टेड का मतलब नहीं, शी स्टार्टेड इन द फिल्म, अब जबरदस्ती मतलब निकालेंगे, ठीक है। शी स्टार्ड, STARRED, she worked, she was the main character, the main lead role. She starred in the film Free Willy 4 in 2010. She starred in the film Free Willy 4 in 2010 and also returned to Nims Island in 2013. So she starred in 2 films, okay? One in 2010 and another in 2013. Bindi sings too. And has made 5 albums with Bindi and the Jungle Girl. चलिए देखते हैं। Princess Diana, charismatic person. Diana did a lot of work. Diana did a lot of work with charities in Africa. Diana is dead, guys, है ना? Diana is dead. She died in 1997. Diana did a lot of work with charities in Africa. And she once walked through She once walked through a minefield in Angola to bring attention to the work of Halo. Hello. Since 1988, this organization has found and destroyed over 1.6 million landmines around the world. अच्छा क्यों past tense यूज किया तुम लोगों ने? I use has found. बहुत अच्छे, क्योंकि कोई काम शुरू हो, क्या आपको पता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन बंद हो गया? हेलो, पता है? ये बात करके ही है क्लैरिटी? No. तो माना अपने मन से कि पास्ट टेंस यूज करें। पास्ट टेंस मतलब फिनिश्ड एक्शन। तो सिंस 1988 जो आपने पढ़ा था इतने अच्छे से, उसको नहीं फॉलो करा। Since 1988, this organization has found and destroyed over 1.6 million landmines around the world. क्या आपने ये वाला सेंटेंस पढ़ा था? Since morning, I've had a headache since morning. I haven't eaten anything since morning. करा था? तो since 1988 से नहीं हो सकता वही चीज since morning की जगह। Since 1988, this organization has found and destroyed over 1.6 million landmines around the world. ठीक है? मतलब अभी ऑर्गेनाइजेशन काम नहीं कर रहा है, इसकी कोई वजह मिल जाए अगर यहाँ पे, तो वी कैन यूज द पास्ट टेंस। लेकिन इसके लिए ये सिंस 1988 क्यों हम लिखेंगे? सोचिए आप ही, हिंदी में क्या बोलेंगे? 1988 से अब तक इन लोगों ने 1.6 मिलियन लैंड माइल्स खोज करके खराब बर्बाद कर दिया, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, ढूंढा और उसको landmines, you know, when they have explosives on the ground, if anybody gets on them, even an animal by mistake, the animal has to die. Okay, so terrorists put these landmines, okay,
and landmines are destructive. They can be dangerous. Okay. She walked through a minefield in Angola. She walked through a minefield. देखो हिम्मत देखो. She walked through a minefield. आरिश माइक यूज करो. अपना मैसेज करके छोड़ दोगे तो नहीं होगा. ठीक है, इतने Yes, छोटे sir. से क्लास में. तो I was क्यों worried, sir, so I कर could लिया था not ask. शी वाज स्टार्ड? क्यों यूज कर लिया तुमने? इसकी वजह दो ना मुझे. Sir, I thought that she was starred by the director, sir. Means यहाँ I लिखा wrote in है, writing. यहाँ लिखा है ऐसा. It is not mentioned here, sir. आगे सुनिए. स्टार वर्ब को यूज करते हैं इंट्रांजिटिवली. आपने एलिमेंट्री में पढ़ा था. आई डोंट नो हु स्टार्ड इन दैट फिल्म. ये लाइन सुना था आपने. Yes, आई sir. डोंट नो हु स्टार्ड Starred इन in. दैट फिल्म. मुझे ये तो नहीं पता उस फिल्म में किसने किसने काम किया है. तो पैसिव वॉइस यूज तभी होता है जब आपको पता होता है कि उसका एक ऑब्जेक्ट है. ये तो कह रहा भैया है इस बात की. कि अगर अपना कोई भी वेबसाइट है या फिर कोई भी अपना प्रोडक्ट है, कोई भी तो स्टार इज एन इंट्रांसिटिव वर्ब. इट कैन नॉट बी यूज्ड इन द पास्ट. Okay, sir. ये जानने के लिए आपको क्या जानना चाहिए था? एलिमेंट्री कोर्स का वो सेंटेंस जो मैंने पढ़ाया यूनिट 7 में, जहां पीपल टॉक अबाउट देयर फेवरेट फिल्म्स. मैं क्या बोलता हूं कि मैं ग्रो करा रहा हूं आपको, ताकि आपके दिमाग में मैसेज जाए. ये एक वर्ब की बात नहीं है, एक कॉन्सेप्ट की बात है. अगर आप इस बात पे ध्यान देते कि वह सेंटेंस कैसे लिखा था. आई डोंट नो हु स्टार्ड इन दैट फिल्म, बट आई थिंक इट वॉज रॉबर्ट शॉ. मुझे याद है वो लाइन, क्योंकि मैं बार बार पढ़ाया तो मुझे याद है. I don't know who starred in that film. I'm not sure who starred in that film. ऐसे ही कुछ बोला था. But I think it was Robert Shaw. तो who starred in that film? तो who starred के बाद क्या है? In that film. किधर ऑब्जेक्ट किधर है? जब है ही नहीं तो उसका पैसिव वॉइस कैसे बना? तो Okay, was sir. starred कैसे हुआ? By the director. इसका ये सीधा सीधा मतलब निकाला जा सकता है. जैसे कि कल शायद रवि ने कहा या आज कहा कि मैं बहुत कुछ बताता हूं, आप लोग कितना ले पाते इस पे है. ठीक है. हाँ, इतना जरूर है कि मैं वो सारी चीजें लिखवा के नहीं छोड़ता. वो लिखवाने लगूं तो फिर प्रॉब्लम क्या है ना, कि जितने टीचर्स लिखवाते उससे बहुत ज्यादा कुछ लिखवा दूंगा मैं. ठीक है, 2-3 गुना मोटा. अब प्रॉब्लम है कि उतना लंबा कोर्स कौन करेगा जब लिखवाने वाली बात आएगी तो. अच्छा, आप मुझे बताएं, जब आप लिखवा ही रहे हैं, इस बात पे ध्यान नहीं दे रहे हैं कि वो सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है, यहाँ तो मुझे बहुत कंट्रोल करना पड़ता है कि भाई ये इस लेवल पे है, इसको इतना छोड़ दो, अभी आगे आएगा ना फिर करेंगे. ठीक. प्री इंटरमीडिएट में आई गेट कैरिड अवे. मुझे लगता है अब लड़के कर लेंगे, हैंडल कर लेंगे. मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने लगता हूँ. होता क्या है, 6 महीने में हम लोग यूनिट 6 में पहुंचते हैं. ठीक है, बात समझ आ रही है? इट वाज सपोज्ड टू बी अ 6 month कोर्स, लेकिन वी आर इन यूनिट 6. वी हैव जस्ट स्टार्टेड एंड इट्स बीन 6 months मोर. ओके, व्हाई? बिकॉज वी टॉक सो मच इन सो मच डिटेल. तो मैं बता रहा था कि अगर मैं लिखवाने लग जाऊं तो इतनी बातें लिखवा दूंगा, लोग कहेंगे कि इतना सारा क्या फायदा. तो मेरे से नहीं होता भाई. हम सिखाने में यकीन रखते हैं. अगर कुछ वह बात बताने लायक तो बता दो. तो पॉइंट सिर्फ इतना है कि आपको पीछे वाली बातें याद रहनी चाहिए. आदेश, एलिमेंट्री कोर्स Yes, को sir. शुरू से आखिर तक ऑडियो फाइल सुनिए और उन चीजों पे ध्यान दीजिए जो नहीं समझ में आ रही हैं. There will Yes, be sir. 10-20% things that you don't understand in the elementary course. Work on those 10%, 20% things. 80%, 90% things are very easy now. Sure, sir. Okay, fine. देखा, अभी मैंने 5 मिनट बिताया आपके इस क्वेश्चन पे. स्टार्ट क्यों नहीं, वाज स्टार्ट क्यों नहीं होगा, ऐसे समझाया. लेकिन इसकी जरूरत नहीं पड़ती है अगर अगर आप एलिमेंट्री वाला कोर्स याद रखते. कौन सा भाई? आई डोंट नो हु स्टार्ड इन दैट फिल्म. अच्छा सुनिएगा. आई डोंट नो हु स्लेप्ट ऑन द रूफ. आई डोंट नो हु Slept in the room. स्लेप्ट का कोई ऑब्जेक्ट है तो बताओ. आई डोंट नो हु स्लेप्ट ऑन द रूफ. There is no object, sir. तो स्लीप को कभी भी पैसिव वॉइस में नहीं यूज किया जा सकता, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट नहीं तो सब्जेक्ट बनाओगे किसको? क्योंकि पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट कौन होता है? जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है. जब ऑब्जेक्ट था ही नहीं तो सब्जेक्ट बना कैसे? डज इट मेक सेंस? Yes, sir. Now I understand. Okay. Moving on to Princess Diana text.
Guys, since 1988, this organization has found and destroyed over 1.6 million landmines around the world. इस ऑर्गेनाइजेशन ने 2001 से 14,000 लड़कियों की शादी करवाई है। ऑलराइट, तो कैसे बोलेंगे, है ना, समझ गए ना, इस सिंस वाले पढ़े हैं ना आप लोग। तो कोई काम पास्ट में शुरू हुआ, अब तक चला है, प्रेजेंट परफेक्ट वही है, इसका इसी का एग्जांपल है। मैंने कहा था प्रैक्टिकली फॉलो करने में मुश्किल होती है, गलतियां करिए और सीखिए। गो होम एंड प्रैक्टिस, ओके, दैट्स ऑल, द सेम एक्सरसाइजेस वन मोर टाइम, totally new. Do not look at your answers that you gave in the class. Try and do the questions one more time. See what you write when you go from here after the lesson. Does it help you choose the more correct form of the verb? Okay, let's see. Prince Harry. Harry, for many years, for many years, period मिल गया? Harry has done Harry charity has work. done charity work for many years. क्योंकि अभी पता हुआ And जितना Harry has done charity work for many years. हिंदी में भी बोलेंगे हैरी कई सालों से चैरिटी वर्क कर रहे हैं। जैसे मैं आपको जानता हूं, मैं इतने दिन से यहाँ रह रहा हूं, होता है ना, तो वैसे ही हैरी कई सालों से चैरिटी वर्क कर रहे हैं। हैरी हैज डन चैरिटी वर्क फॉर मेनी इयर्स एंड has continued his mother's work with Hello in Africa. He has continued his mother's work with Hello in Africa. He has visited minefields. Has visited क्यों बोल रहा हूं, अनुभव बता रहा हूं, उनके अनुभव, ओके, लाइफ के अनुभव। He has visited, यही अनुभव प्रिंसेस डायना की भी बताई, पास्ट में बताई, क्योंकि प्रिंसेस डायना रहे नहीं। तो अगर गांधी जी के लाइफ का अनुभव बताना हो तो कौन सा टेंस लेंगे हम लोग, बिकॉज गांधी जी नहीं रहे, लेकिन हमारे लाइफ का अनुभव प्रेजेंट परफेक्ट। he has visited minefields. He has visited minefields in Mozambique and Angola. And in 2017, he has asked all governments to stop using landmines by the year 2025. And in 2017, he has asked all governments to stop using landmines by the year 2025. He has asked all governments to stop using, he has asked, उन्होंने कहा है ऐसा करने के लिए, he has asked. अच्छा, लेकिन इन 2017 लिखा है तो मैं नहीं बोल सकता ही हैज आस्क्ड। आप लोग चुपचाप सुन रहे हैं, देख रहे हैं आप लोग। 2017 में, 2017 पास्ट टेंस हुआ कि नहीं, टाइम मेंशन कर दिया, कब वाली बात हो गई, तो कौन सा टेंस यूज करना चाहिए था आपको? Sir, I noticed that, sir, but अब आपका क्या लिखा I था did वो not मायने नहीं ask. रखता I ना, think you क्योंकि will. मैंने बोला तो आपने करेक्ट नहीं ना किया मुझे कि सर ये पास्ट सिंपल होना चाहिए, बिकॉज टाइम इज मेंशन इन 2017, इतना ही बोलना था ना, क्योंकि ये बहुत सिंपल है। जब भी बता दोगे कब, तो कौन सा टेंस हो जाएगा, पास्ट टेंस। तो आपने क्या लिखा है, डज इट काउंट एनी मोर, डज इट काउंट एनी मोर, ठीक है, आपने खुद सही सोचा। जब मैंने करेक्ट किया तो आपने बोला कि सर मेरा तो सही से, आप तो गलत बता रहे हो, ऐसा बोला आपने, अरेश? I didn't say this. I thought that you will be angry, sir. हाँ, तो मैं गुस्सा हो जाऊंगा, इसलिए गलत आंसर सही हो गया। तू निकल जा क्लास से, तो निकल जा क्लास से, तू मेरे गुस्सा के चलते तू सही आंसर को गलत, गलत आंसर को सही करेगा। रुक रुक रुक, निकालता हूँ Sorry, तुझे। sir. अरे नहीं, तेरा सही सॉरी काम नहीं करेगा तेरा, रुक निकालता हूँ तुझे। निकाल दिया। दिख रहा आरिश किसी को? आरिश नहीं दिख रहा किसी को, आरिश निकल चुका है क्लास में। आरिश दिख रहा है इस किसी को? नहीं ना, हटा उसको। उसको मेरे गुस्से के चलते सही आंसर गलत, गलत आंसर को सही करेगा वो लड़का, कैन यू बिलीव इट? रहेगा, अब जाकर के वहां ब्रेका वेटिंग रूम में रहेगा आधा घंटे, उसका होश ठिकाने आ जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं। ओके, देखो, इन 2017 he asked all governments to stop using, बेटा इन 2017 पर से हटा दो ना, फिर क्या हो जाएगा? He has asked. तो टाइम अगर नहीं मेंशन करा हुआ है तो आप अनुभव के तौर पे बता रहे कि उन्होंने ये भी कहा है, he has asked
all governments will stop using. लेकिन यहाँ लिखा है in 2017. So obviously the past tense. ले आए क्या वापस इसको जी? आप लोग बोलो, आप लोग जैसा Yes, sir. बोलोगे वैसा ले आए उसको ले वापस आइए. जी, Yes, sir. ले आए। यस सर। शिवाजी का बोल जाफरी, जाफरी whatever you say, बोल दो नहीं लाने ला दूंगा। ले आए सर। ऐसा होता है सर. कोई तो बोल देता है नहीं ला। हमको ना बाहर निकाल. बच्चा है सर। यस, जाफरी चाचा के सामने तो सारे बच्चे ही है। ऐसा बहुत बार होता है सर, किसी के सामने बोलने में लगता है अगर बोले तो गलत रहा किसी तरह तो अरे हमको निकालेंगे बाहर. तुम तो अपना वो बना रही हो, मुझे पता है ना क्या कहते हो उसको। नहीं नहीं, ग्रुपिज्म कर रही है लड़की है। इसको एक दिन मेरा धज्जी हथियाना, हम जानते हैं लड़के लोग तो बह रखा आएगी कर कहीं हटाओ इनको, फिर हम ये भी पढ़ाएंगे। गलती करेंगी सर, इसीलिए अपने बचाव के लिए कर रही हैं। अरे सही बोला जाफरी। ओके ओके, गलती से भी निकाल रहे थे Sir, किसी I want to say we all Sir, but my answer was correct. कोई फायदा नहीं कुछ बोलने का। made mistake, but why you are punish only Aris? पता नहीं, मेरे को उससे नफरत बहुत अंदर तक। But You know, he is very good student, sir. then why don't you teach him? I don't like him, इसलिए मैंने उसको निकाला। आप समझ गए ना अकेले उसको क्यों पनिश किए हम? बिकॉज आई डोंट लाइक हिम। ओके नाउ मुझे लोगों के इमेजिनेटिव पर्सनालिटी को चीज करने में और हाईलाइट करने में इतना मजा आता है ना। चले देखते हैं। नंबर जॉन लेनन। John wrote most of the Beatles songs with Paul McCartney. Why not John has written? Time तो नहीं दिया हुआ है, टाइम तो नहीं दिया हुआ है। He's no more. He's no more. Is How no can more. you tell us about him in the present perfect? Okay, John wrote most of the Beatles songs with Paul McCartney. ये इंग्लिश का रूल है, ठीक है ना, इसके हिंदी से मैच करने की गुंजाइश नहीं है। After the Beatles, when the Beatles broke up, okay, John Became. became a solo artist. चलो रुकिए वापस उसको लेके आते हैं, थोड़ा क्लास होना सुना लग रहा है, ठीक है। तो लेट मी ऐड आरिश। No, sir, you have already added Oh, have him. I? Okay, okay, yes, Yes, he's sir. just arrived. Arish, welcome back. Sir, you have lots of skills, Arish, sir. have you I got want in, to Arish? be as a you. नहीं, आपको कहाँ आरिश दिखा? आरिश तो नहीं यहाँ पे। Sir, You don't प्रोफाइल remember. दिखता है सर बट Oh, he has just So I'm arrived. here. हाँ, देखो मैंने तुम्हें समझाने के लिए ये सब पनिश किया, ठीक है, इसलिए ज्यादा सीरियसली मत लेना, ठीक है। No, sir. Thank you. I was Okay. not out, sir. I was in the class. I was Sir, just muted. from today, Aris will speak truth. You will speak the truth. Speak means truth. मतलब if the sentence is incorrect, he will say that it is incorrect. Okay. He will not be scared of my anger, Yes, sir. my temper. I hate those people who value my temper so much. I mean, value my temper. If I'm really getting emotional, then please don't make me more angry by saying or doing something. But I don't want people to say, hey, you know what? I knew what you were saying was wrong, but I still kept quiet because I didn't want to make you angry. Really?
John wrote most of the Beatles songs with Paul McCartney. After the Beatles, John became a solo artist and also did a lot of work for the peace movement with his wife Yoko Ono. इसीलिए पीस मूवमेंट वाला आदमी था, इसलिए उसने इमेजिन सॉन्ग लिखा. ओके, पीस मूवमेंट. We need a lot of peace. Yeah, the leg piece, the breast piece. Julian began or has began. क्या बोलते हो? Has begun. Has begun playing guitar when he was 10. सही है? कौन सा tense? Sir, perfect. अरे भाई, जो डरा हुआ लड़का उससे पूछो ना, हरीश. Yes, sir. हाँ, yes sir. Which one, sir? Julian began. Very well done, Arish. Guys, has begun is wrong because ये किधर से है present perfect का sentence? यहाँ तो time दिया हुआ तुमको. When he was 10. So why would you choose present perfect? Just because Julian is alive, तो हर बात उसके लिए present perfect बोल दे. बोले कल वो toilet गया था तो he has gone to toilet. ऐसा बोलेंगे? कल वो मुझसे मिला था तो he has met me yesterday. ऐसा नहीं होता ना? Time is given now. When he was 10. So the correct tense will be the past tense. Julian began playing guitar and drums when he was 10. And 6 solo albums. Batao, make. Which tense? Arish, are you still scared of me? No, sir. And Then Past, why sir. are you stopping yourself from answering the question? Yes, sir. Which one? Which tense? Simple has past. made. Present perfect. Past tense. Simple past. Has made. Manisha Has says made, sir. Made. present perfect, present perfect. Tani. Present. Julian began playing so and so and made 6 solo albums in 2006. And he has made. बेटा थोड़ा ध्यान से, अरे स्पीड नहीं पकड़ना. So Julian began. I need water, which is so. He has made. We heard. Yes, sir. Has made, sir. Sorry. Has made. Pakka. In 2000. Give me the logic, Alex. Because Julian began playing guitar and drums when he was 10 years old. Time is mentioned here. And made 6 solo albums only that time. Because there is a full stop after that. So, which tense do you want to use with name? Present perfect. Which tense in this sentence? Present perfect. Name. Which tense do you want to put the verb make in? Which Past. tense do you want to put the verb make in? Past, sir. Yes, I'm putting the past. Manisha? Sir, मैं तो has made. Okay. Do you know the reason or it's just a guesswork for you guys? Sir, Is it a gut feeling? Is it a gut feeling or a solid logical answer? sir, it's about his experience. All right. Tani. Arish, you're confused a little bit. I don't know what you're saying actually. I have no idea what you're saying. Whether you're saying the past simple or the present perfect, I don't know. I don't know your answer because you're not speaking clearly. And I don't think you're worried about my anger. You are more worried about your image in the class, Arish. You manipulated when you said you were worried of my anger. Because right now, you know, मैंने तुम्हें कभी नहीं निकाला, सब मजाक चल रहा था. और जब मजाक Yes, चल sir. रहा था फिर भी कोई आदमी फिर भी फालतू का मुंह चुप करके ऐसे खड़ा रहे और अपना आंसर ना दे, तो मैं नहीं मानता कि वो मेरे गुस्से से डर रहा है. वो अपने इमेज के लिए परेशान है कि मैं क्लास में खराब ना लगूं गलत बोल करके. ये हो सकता है. अगर ऐसा सच नहीं है तो फिर तुमको तो एकदम आगे आना चाहिए था कि सर ने मुझे कभी निकाला नहीं, मजाक कर रहे थे वो. So I said that I was quiet only. I did not out. I know you did, but did you realize that it was all a joke? And if you realize it was all a joke, then jokes are made to make people smile or jokes are supposed to make people serious.
Make people smile. Make So people very happy. good answer, because I was really interested in what you were going to say. तो तुम कभी ये आंसर कभी वो आंसर, लेकिन नॉट एनी क्लियर। अगर किसी को पता है कि आरिश ने क्या आंसर करा है तो बता दे मुझे। Sir, please share the screen again. I'll see. Don't you have the book? I'm out. I'm not in the home, sir. Not home. You're not home. Yes, sir, share again. Yes. Read. So Julian began playing guitar and drums when he was 10 and made 6 solo albums when he was 10. ये कैसे पता चल गया कि made 10 albums, 6 solo albums when he was 10? इतना Because तो sir, prolific the एक word है दोस्तों। prolific सुन लीजिए, prolific एक word है, prolific, okay, prolific. A prolific writer, okay, writes a lot of books. A prolific career means has a lot of records. तो prolific, तो एक 10 साल में 6 एल्बम बना दे, इतना तो prolific कोई नहीं होता, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था ये। बाकी इस वजह से भी गलतियां होती कि आप लोग अपना दुनियादारी वाला समझ छोड़ देते हैं, ठीक है दोस्तों। उसने कहा कि 10 साल में 6 एल्बम बना दिए, सोलो एल्बम, ठीक है, बात समझ में आ रही है? 10 साल में 6 सोलो एल्बम बना दिए, जबकि यहाँ लिखा है कि उसने प्ले करना शुरू किया कब, गिटार और ड्रम्स? 10 साल में। इसमें लिखा है कि he began playing guitar and drums when he was 10, और जब गिटार और ड्रम्स बजाना शुरू किया तो 6 सोलो एल्बम्स बना दिया उसी समय, ठीक है, 10 साल की उम्र में। ऐसे सोच रखी तुमने आरिश, कितना लॉजिकल है? लॉजिकल है कुछ भी इसमें? yes, I thought the same, sir. हाँ, तो मैं पूछ रहा हूँ इसमें कोई लॉजिकल है? 10 साल में उसने शुरू किया क्या, गिटार बजाना और ड्रम बजाना, तो उसके बाद ही बना होगा एल्बम। तो ये ज्यादा नहीं बेहतर होगा कि अब तक उसने 6 एल्बम बना दिए हैं? 10 साल की उम्र में उसने शुरू किया गिटार बजाना और ड्रम बजाना, और अब तक 6 एल्बम उसने निकाले हैं। He has made 6 albums, 6 solo albums. अब मैं बताता हूँ कि इसकी प्रेजेंट परफेक्ट क्यों है दोस्तों, क्योंकि वो अभी भी बना सकते हैं एल्बम, अभी भी बनाएंगे, राइट? तो 6 एल्बम बना चुके, इसको आप एक्सपीरियंस देख सकते हैं, या एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट हैज कंटिन्यूड टू द प्रेजेंट। और एक और तरीके से एक्सप्लेन करेंगे इनको हम लोग थोड़े दिन में, ठीक है, 1-2 दिन बाद फिर पढ़ेंगे ग्रामर रेफरेंस, देन वी विल हैव अ स्मॉल रूल देयर व्हिच विल हेल्प यू अ लॉट। In 2006, now 2006 is the next sentence. It is not part of that 6 solo albums. वो भी वही गलती कर रहा था जो उस समय सवाजी कर दी, हड़बड़ी में पढ़ दी, है ना? हड़बड़ी में नहीं पढ़ना चाहिए। In 2006, everybody should get it right. In 2000, He produced a Produced. film a film about the environment Dreamers. called Well Dreamers, and He has And recently written written a children's book called Touch the Earth. a children's book called Touch the Earth. Okay, good job. तो दोस्तों अब चलते हैं इसके ऑडियो फाइल की तरफ। Let's listen to the audio file 6.2. Let's listen to 6.2. Sunita is not here. Has she given up? She said enough is enough. Not gonna take his roast anymore. Wildlife Park in Australia and became a popular TV personality with his TV series The Crocodile Hunter. He died in 2006 while filming a program about stingrays. Bindi has been a TV personality since she was 2. Since her father died, she has made many wildlife TV programs of her own. She starred in the film Free Willy 4 in 2010 and also returned to Nims Island in 2013. Bindi sings too and has made 5 albums with Bindi and the Jungle Girls. 2. Princess Diana and Prince Harry. Diana did a lot of work with charities in Africa,
and she once walked through a minefield in Angola to bring attention to the work of HALO. Since 1988, this organisation has found and destroyed over 1.6 million landmines around the world. Harry has done charity work for many years and has continued his mother's work with HALO in Africa. He has visited minefields in Mozambique and Angola, and in 2017, he asked all governments to stop using landmines by the year 2025. 3. John and Julian Lennon. John wrote most of the Beatles songs with Paul McCartney. After the Beatles, John became a solo artist and also did a lot of work for the peace movement with his wife Yoko Ono. Julian began playing guitar and drums when he was 10 and has made 6 solo albums. In 2006, he produced a film about the environment called Whale Dreamers, and he has recently written a children's book called Touch the Earth. One more time, okay? Full attention, everybody. Try and understand. 6.2 हिंदी भी सोचना. In Famous Footsteps. 1. Steve and Bindi Irwin. Steve grew up on his parents' wildlife park in Australia and became a popular TV personality with his TV series The Crocodile Hunter. He died in 2006 while filming a program about stingrays. Bindi has been a TV personality since she was 2. Since her father died, she has made many wildlife TV programs of her own. She starred in the film Free Willy 4 in 2010 and also returned to Nims Island in 2013. Bindi sings too and has made 5 albums with Bindi and the Jungle Girls. 2. Princess Diana and Prince Harry. Diana did a lot of work with charities in Africa, and she once walked through a minefield in Angola to bring attention to the work of HALO. Since 1988, this organisation has found and destroyed over 1.6 million landmines around the world. Harry has done charity work for many years and has continued his mother's work with HALO in Africa. He has visited minefields in Mozambique and Angola, and in 2017, he asked all governments to stop using landmines by the year 2025. 3. John and Julian Lennon. John wrote most of the Beatles songs with Paul McCartney. After the Beatles, John became a solo artist and also did a lot of work for the peace movement with his wife Yoko Ono. Julian began playing guitar and drums when he was 10 and has made 6 solo albums. In 2006, he produced a film about the environment called Whale Dreamers, and he has recently written a children's book called Touch the Earth. 6.2 In Famous Footsteps. Now, everybody, complete these questions only. Don't answer them. Just complete the question. Let's see how well you do this task. Do send your answers to me, okay? Answers means the questions that you form.
Send in your answers, okay? It is in the group, the question. You have to just complete the questions, which tense sounds good? The present perfect, the past simple, let's see how much you have understood. And don't worry about the failures. Don't worry about the mistakes. I told you, we have got the whole unit to work on this. The mistakes should just contribute to your understanding. I mean, the explanations to those mistakes. है मुश्किल तुम लोग की, है ना? यहाँ हो रही है, चलो कोई नहीं, एक्सप्लेन करेंगे, सीख जाएंगे. Two people have dropped. Which two people have dropped, by the way? Can't recall. I have sent, sir. Yeah, there are a few mistakes. Are if you're not observing, each सवाल कैसे पूछना था, क्यों पूछना था? Past simple, finished action. Finished action नहीं समझ में आता तुम लोग को. कम से इतना तो समझ में आता है कि जो काम पास्ट में शुरू अभी तक चल रहा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट है. ठीक है. चलो ठीक है. Let's see. Yeah, that's correct sentence. आगे. लेकिन और भी जगहों पे देखना पड़ेगा ना बेटा. Yes, sir. Was the charge was started, ये क्या है सेंटेंस? कौन सा सेंटेंस? कभी देखा है ऐसा सेंटेंस बेटा?
जो देखो वही लिखो, जो देखो वही बोलो, सुनो वही बोलो, तभी सीख पाओगे। हिंदी की इंग्लिश करने अपने सेंटेंस फॉर्म अभी मत करो, अभी अपने आप को ज्यादा से ज्यादा इनपुट दो, ठीक है? उन्हीं का जब मिक्स होगा ना तो आएगा। द चार्ज वाज स्टार्टेड। आई अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन, द सेंटेंस इज करेक्ट, यू शुड से ही, you know, got in office in 2014 and is still there, you know. He became, इसको ऐसे भी लिख सकते थे, he became the prime minister in 2014 and is still the prime minister, इसका है ना। तो ये जो लिखा ना, Yes. चार्ज वाज स्टार्टेड, डजंट मेक सेंस, ये थोड़ा गलत इंग्लिश है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सब लोग का हो गया? डू यू नीड मोर टाइम? खाओ खाओ, जल्दी खाओ, बर्तन धोना है भाई। भाई I will share 6.1, 2, and 3. 6.2. In famous footsteps. 1. Steve and Bindi Irwin. Steve grew up on his parents' wildlife park in Australia and became a popular TV personality with his TV series The Crocodile Hunter. He died in 2006 while filming a program about stingrays. Bindi has been a TV personality since she was 2. Since her father died, she has made many wildlife TV programs of her own. हिंदी में दो तरह से, उसने ये किया है, उसने वो किया है, ये सब नॉर्मली अनुभव के तौर पे देखे जाते हैं ना। वो 5 पहाड़ पे चढ़ चुकी है ना, दुनिया के सारे ऊंची चोटियों पे वो चढ़ चुकी है, उसके तौर पे देखा जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट। वो फलाने पे चढ़ी थी 2016 में, चिल्लाने पे चढ़ी थी 2018 में। बहुत सिंपल हो गया। चलो, इट्स ओके, इट्स ओके। चलिए हम लोग देखते हैं दोस्तों, कम ऑन, डोंट वरी, ओके। चलिए देखते हैं। A lot of people have dropped, they have dropped, I don't know how and why. There were 14 people and now there are 10. 4 people dropped. Kusum dropped. No, Kusum is here. Can you please quickly tell me who dropped? Because I cannot recall. My memory is so bad. Vikas has dropped 1. Ravi. Musharraf, Vikas, Ravi, and Ankit. 4 people. Thank you for helping me out, guys. Okay. Let me play. Listen, everybody, listen. Match. And then we will discuss. 6.3. Questions and answers. We will discuss if you're wrong, okay? Why you're wrong. खाली correct नहीं करना है कि अच्छा ये करके ये कर देते, छोड़ देते, ये ऐसे हो गया। क्यों होना चाहिए? We need to understand. Let's see. 1. Where did Steve Irwin grow up? He grew up on his parents. Steve Irwin. Steve Irwin, right? Where did he grow up? कहाँ बड़े हुए थे वो? हिंदी में कैसे बोलेंगे? कहाँ बड़े हुए थे? कहाँ बड़े हुए थे? Where did he grow up? Wildlife Park in Australia. आप लोग ऐसे कुछ और लोग के बारे में पूछ सकते हैं। सचिन तेंदुलकर कहाँ बड़े हुए थे? ठीक है, हाँ, कहाँ बड़े हुए थे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वेयर डिड ही ग्रो अप? वेयर डिड सचिन तेंदुलकर ग्रो अप? इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो जिंदा है वो मर गए, क्योंकि ग्रो अप होना क्या होता है? फिनिश्ड एक्शन है। अब और ग्रो अप करेंगे तो ग्रो अप हो गया ना। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो ऐसे ही गांधी जी कहाँ पढ़ाई किए थे, तो ऐसे ही सचिन तेंदुलकर के बारे में भाई वो कहाँ पढ़ाई किए थे। ये एक तरीका है देखने का दोस्तों। मैं हिंदी में जरूर बोल रहा हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे इस बारे में कि ये पास्ट, मरे हुए, जिंदा, खाली खाली ऐसा नहीं होता कि एक बाइनरी पकड़ लो कि मरा हुआ तो पास्ट, जिंदा है तो प्रेजेंट, ऐसा नहीं चलेगा। सेंटेंस तो सुनो। वो कहाँ पर स्कूल गए थे? गांधी जी स्कूल कहाँ कहाँ स्कूलिंग हुआ था? गांधी जी का स्कूलिंग कहाँ हुआ था? सेम क्वेश्चन। तेंदुलकर का स्कूलिंग कहाँ हुआ था? वही सेम क्वेश्चन। विराट कोहली का स्कूलिंग कहाँ हुआ था? हालांकि विराट कोहली के मामले में, तेंदुलकर के मामले में एक और बात बोला जा सकता है कि वो वहां पढ़े हैं, बोला जा सकता है। गांधी जी के बारे में ये नहीं बोला जा सकता कि वो वहां पढ़े हैं। तो जो लोग जिंदा हैं उनके बारे में हम 2 तरह से बातें करेंगे। एक तो बात करेंगे उनके पास्ट के बारे में, जो जिंदा है पास्ट सिंपल में, और एक उनके अनुभवों के बारे में प्रेजेंट परफेक्ट में।
Present perfect altogether is not possible when you're talking about dead people. क्या बात समझ में आ रही है दोस्तों? डेड पीपल के बारे में प्रेजेंट परफेक्ट पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन जो जिंदा है उनके बारे में दोनों चीज पॉसिबल है। पास्ट सिंपल भी पॉसिबल है, प्रेजेंट परफेक्ट भी। अगर उनके पास्ट एक्शंस की बात करें, मैंने अगर बताया कल मैंने चिकन खाया था, तो मैं पास्ट में बोलूंगा। और अगर हम बताएं हम चिकन खाए हैं, हम जानते हैं चिकन का स्वाद, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट में बोलेंगे। दोनों अलग अलग बातें हो जाती हैं। क्या कैन यू एक फील दिस? मैंने ये खाया है, क्या कहते हैं, हाँ ढोकला खाया है, ढोकला का टेस्ट मुझे पता है ना? राइट, कल फलना जगह गए थे, ढोकला खिलाया, तो हम ढोकला खाए, तो ये हो गया आई एट ढोकला यस्टरडे व्हेन आई विजिटेड एक्स वाई जेड। तो एक जिंदा आदमी के लिए दोनों चीजें पॉसिबल है, और जो मर गया उसके लिए पास्ट सिंपल। प्रेजेंट परफेक्ट किस हिसाब से बताए भाई? वो तो मर गया है, उसकी बात का प्रेजेंट से क्या कनेक्शन हो जाएगा? ठीक है, तो क्या ये मेरी बात प्रैक्टिकली समझ में आ रही है? तो चलो देखते हैं, स्टीव अर्विन कहाँ बड़े हुए थे? ऐसा सवाल हम हिंदी में किसके बारे में नहीं पूछ सकते? यही हिंदी होगा ना इसका। स्टीव अर्विन कहाँ बड़े हुए थे? ठीक है, गांधी जी कहाँ बड़े हुए थे? सुभाष चंद्र बोस कहाँ बड़े हुए थे? और वैसे ही आज के किसी नेता के बारे में पूछ लो, लालू जी कहाँ बड़े हुए थे, उनका बचपन कहाँ बीता? हाँ, ठीक है। लेकिन लालू जी के बारे में ये भी तो बोला जा सकता है कि उन्होंने अपना बचपन यहाँ बिताया है, एक अनुभव के तौर पे, इसलिए इस जगह को बहुत अच्छे से जानते हैं। ऐसा करा जा सकता है ना? तो उस हिसाब से समझना है आपको कि जब किसी बात को प्रेजेंट से कनेक्ट कर देंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट की जरूरत पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 2 है, कब मरे वो? व्हेन डिड ही डाई? एवरीबॉडी गॉट इट राइट, आई थिंक every single person in the class got it right. When did he die? Number 3, how many films? अभी आइए सुनते चलते हैं। 2, When did he die? He died in 2006. 3, How many films has Bindi Owen starred in? She's हमने प्रेजेंट परफेक्ट क्यों चुना इसमें, और आप लोगों ने पास्ट सिंपल क्यों चुना? क्या बिंदी अरविंद और फिल्में नहीं कर सकती हैं? कर सकती हैं। तो हम हिंदी में क्या पूछेंगे, उसने कितनी फिल्मों में काम किया था, कि कितनी फिल्मों में काम किया है? पूछिए अपने आप से। बिंदी अरविंद को देखिए प्लीज, और मुझे बताइए क्या पूछेंगे, ये औरत ने, इस लड़की ने कितनी फिल्मों में काम किया था? आपके मन में क्या आ रहा है हिंदी में कि इस लड़की ने कितनी फिल्मों में काम किया है? क्या आ रहा है? राइट, तो क्यों आपने पास्ट सिंपल बोला? क्या बोलना चाहिए था? How many films has Bindi Irwin starred कहाँ है? in? उसने कितनी फिल्मों में? हाउ मेनी फिल्म्स हैज शी स्टार्ड इन? समझ में आ गई बात? गलतियां कर करके सीखते जाइए दोस्तों। starred in 2 films. She has starred in 2 films. Okay, 4, everybody can guess which one is the right question. How many albums did she make or has she made? Has she made? How many albums has she made with the Jungle Girls? कितनी She's albums made बनाई 5 albums. कितनी बनाई है उसने? एल्बम्स बनाई हैं कि कितनी बनाई थी? She बनाई made है। 5 albums. She is made, she has made। 5, Where did Princess Diana walk through a minefield? She walked through a minefield in Angola. कहाँ कौन से माइनफील्ड में कैसे होके गुजरी है कि थी डायना? Where did she? मैं हिंदी इसलिए पढ़ रहा हूँ, कनेक्ट करो। सारा चीज कनेक्शन का खेल है। क्या आप ये प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट परफेक्ट हिंदी से कनेक्ट कर पाते हो कि नहीं? कनेक्ट करना और टीचर के बता देना, दोनों में फर्क है। टीचर ने बता दिया, आपने रट्टा मार दिया, और आप खुद अपने आप से महसूस कर रहे हैं कि ये हिंदी इससे मैच करती है इससे। 6, Where has Prince Harry visited minefields? इसके बारे में हिंदी में कैसे पूछेंगे? हैरी के बारे में? प्रिंस हैरी कहाँ, कौन से माइनफील्ड में वो विजिट किए हैं? ठीक है, अच्छा, और कब विजिट किए थे, किसके साथ विजिट किए थे, ये भी बोला जा सकता है प्रिंस हैरी के बारे में, लेकिन अभी हम खाली ये जानना चाहिए वो कहाँ गए हैं। ठीक है, कौन से माइनफील्ड में वो विजिट किए हुए? Where has he visited? He's visited minefields in Mozambique and Angola.
2007 में उन्होंने सारे गवर्नमेंट्स को क्या करने के लिए कहा है कि क्या करने के लिए कहा था? 2017 में उन्होंने क्या करने के लिए कहा है या क्या करने के लिए कहा था? कहा है, क्या करने के लिए कहा था? 2017 में उन्होंने क्या करने के लिए कहा है कि कहा था? आप डिसाइड कर लो। हिंदी, मुझे इंग्लिश की बात, हिंदी में डिसाइड करो। था। जा हिंदी सीख ले। ही है। छोड़ना आलाय। अरे नहीं, ये ऐसे ही बोल रहा है, इसको पता भी नहीं, खाली मैंने डांट दिया इसलिए बोल रहा है, ठीक है? हाँ, आप नहीं समझाइए, अभी भी नहीं समझाया, ठीक है? नहीं समझाया, ठीक है? अगली बार मैं मीम वाला समझूंगा। बताया ना वो, उसको देखो, कुछ लड़कों को क्या कि टीचर ने डांट दिया, वो अपना आंसर चेंज कर लेंगे, कोई मतलब नहीं कि क्यों। अरे भाई यार, तुमको डांट से शरीर में क्या चमड़ा उतर जाता है? प्रॉब्लम है कि तुमको 10 लोगों के बीच सुनना नहीं है कुछ, ईगो तुम्हारा हर्ट हो जाता है, तुम कॉम्प्रोमाइज कर लोगे। अरे पूछो ना पलट के कि कैसे गलत हुआ ये, हाँ कि ना? क्योंकि तुम्हारे अंदर जो क्यूरियोसिटी है उसको सेटिस्फाई करो कि क्यों गलत होगा ये होना चाहिए तुम्हें। हम डर गए, हमको डांट पड़ जाएगी, ये क्या बकवास है, एब्सोल्युटली नॉनसेंसिकल, ठीक है? तो फिर से वापस आते हैं। 2017 में हैरी ने सारे गवर्नमेंट्स को क्या करने के लिए कहा था। हिंदी बोलनी आती है? अगली बार से मैं बोलूंगा, तू समझा? नहीं, तू नहीं समझा। नंबर 8, जॉन लेनन राइट सॉन्ग्स विद। जॉन लेनन किसके साथ गाने लिखते थे? यही बोलेंगे ना, किसके साथ गाने लिखते थे, हो गया। Who did John Lennon write songs with? आप हिंदी देख लो ना। जूलियन लेनन कब गिटार बजाना शुरू किए थे? जूलियन लेनन ने गिटार बजाना कब शुरू? लिखा हुआ है, जूलियन लेनन ने गिटार बजाना कब शुरू, आगे खत्म करो। किया था, हाँ, कब शुरू किया था? पास्ट टेंस है। When did, ऐसे भी टाइम के बारे में when जब भी पूछे तो पास्ट ही है, as simple as that। when आया तो पास्ट है वो। When did Julian Lennon began playing the guitar? लास्ट कितने गाने सोलो एल्बम जूलियन ने बनाए हैं? बनाए हैं। How many solo albums has Julian made? थोड़ा रिकॉर्डिंग देख लेना, सारी बातें करी अच्छे से, दिमाग थोड़ा लगा देना, 10-15 मिनट दे दोगे ना ये रिकॉर्डिंग देखने में, आखिर वाला हिस्सा। नो प्रॉब्लम्स, आई मेड वन मिस्टेक, ओके? गलतियां करिए, उनसे सीख लीजिए, ओके? दैट्स ऑल। आई विल सी यू गाइस टुमारो। बाय एवरीबॉडी। Bye sir, good night. बाय, गुड नाइट।